slit experiment. So the question number 1 is state the principle of superposition, and this part is for 2 marks. Okay. So what is the principle of superposition? So superposition principle is when two waves are traveling in the same direction and meet at a point, the resultant wave has an amplitude or displacement which is equal to the sum of the individual displacements. Okay, so when two waves are traveling in same direction and meet at a point. So and meet at a point. Okay. So resultant displacement is equal to sum of individual displacements. Okay, because मेरा size compact है ना, otherwise ये पूरा fit in हो जाता. Okay, so 1 mark के 2 waves, they are traveling in the same direction and meet at a point. 1 mark for this, and the other mark is resultant displacement is equal to the sum of the individual displacement, and this is your principle of superposition. So 1 for this and 1 for up till this point. Okay, now let's just look at the next question. So light of wavelength is incident normally on a double slit as shown in figure 4.1. So we know the wavelength, lambda is already given to us. We know the slit separation as well, which is 0.16 millimeter. So millimeter ke liye, we have to multiply it with 10 की power minus 3 to convert it into meters. So we know the slit separation. Capital D is the distance between the slits and the screen. Capital D is unknown to us. A screen is at a distance D from the double slit. The double slit and the screen are parallel. The separation of the slits in the double slit arrangement is 0.16 millimeter. Okay, so the resulting interference pattern on the screen contains 9 dark fringes as shown in figure 4.2. So X क्या होता था? X is the fringe separation. So अब 9 fringes हैं. So if these are the dark fringes, so ये एक X है, then this is another X, another X. So X is actually the distance between 2 consecutive dark fringes or 2 consecutive bright fringes. Okay, so how many X do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So if I have to calculate X, which is the fringe separation, so X will be equal to 3.2 divided by 8. So we get 0.4 centimeter. And again, if the value is given in centimeter, so we will convert it into meter. So we divide it by 100 and we get the value to be 0.004. Okay, so X भी पता लग गया, which is the fringe separation. A भी पता है, which is the slit separation. Lambda pata hai, which is the wavelength, and D. Okay, now the distance between center of, okay, calculate the distance D. So what is the formula? Lambda is equal to AX over capital D. Now we have to find D. So let me make capital D as the subject. So AX over lambda.
ठीक है. Now A is the slit separation 0.16 into 10 की power -3. Fringe separation कितनी है? 0.4. And what is the wavelength? And the wavelength is given as 7.2 into 10 to the power of -7. So substitute all these values on your calculator and you will get the final value or the final answer for the distance. Ji, can you just tell me what is the value that we get? Okay, sorry, 0.004. So we have to use the value that was in meters. So the answer that we get is 0.888. So 0.888 meters. And we have to give the final answer to two significant figures. So the final answer is 0.89 meters. Okay, the slit separation. So slit separation का मतलब क्या है? He's talking about small a. Is now gradually decreased from 0.16 millimeter to 0.04 millimeter. The distance between the centers of adjacent dark fringes is x. So fringe separation is x. On figure 4.3, sketch the variation of x with slit separation. Okay, so now we have to study the relation between the slit separation and the fringe separation. So जो expression है इसमें हम lambda is equal to ax over d. ये d उधर जाके multiply कर देता हूं और ये small a इधर लाके divide. So this is the relation. We have to rearrange. जिन दो quantities को आपने compare करना होता है, you have to make sure कि एक quantity equal के एक side पे हो and the other quantity is on the other side of the equal sign. So x is on the right and a is to the left. Now, the wavelength of the incident light is constant. The distance between the slits and the screen is also constant. So ye constant hai. So we can say what is the relation between the slit separation and the fringe separation? They have an inverse relation. So अगर तो slit separation decrease होगी तो fringe separation will automatically increase. Okay, now let's जिन दो values को compare करना है, so मैं A और X, जब A slit separation 0.16 millimeter है, तो at that point what was the fringe separation that we got? It was 0.4 centimeter. क्योंकि उसने X की values किस में ली हुई है? सेंटीमीटर में, और slit separation की values millimeter में ली हुई है. So we are going to use those values. So X was 0.4 centimeter. So can I say कि 0.16 पे ये हमारे पास पॉइंट है. अब हमने एक चीज पढ़ी है कि X and A they have an inverse relation. तो अगर मैं A की वैल्यू हाफ कर देता हूं 0.08 मिलीमीटर, तो what happens to the value of X? वो डबल हो जाएगी. So that will be 0.8 centimeter. So can I write कि 0.08 millimeter पे the fringe separation is 0.8. So this is where the point lies. अब मैं इसको और हाफ करता जाता हूं. अगर 0.08 को दोबारा हाफ करता हूं तो what happens to the fringe separation? It doubles again. तो 0.8 का डबल क्या होता है? 0.8 times 2 is 1.6. So that means when A is 0.04, so what is the fringe separation? It is 1.6. So ये तीन points है and they have an inverse relation. So if I join these points together, okay,
So just part my graph, just थोड़ा सा नीचे हो गया. Yeah. Okay. Now it's perfect. ठीक है. तो inverse relation है. You can clearly see that when the slit separation is increasing, the values of x is decreasing. ठीक है. So this is for how many marks? Okay. So the graph was for 3 marks. Okay. So that means that you have correctly plotted uh, these points on your graph. 2 marks for plotting all 3 points correctly, and 1 mark कि you show a curve. ठीक है. I hope it's clear to everyone. So question was state principle of superposition when we have two different waves and they travel in the same direction, 1 mark, and they meet. Okay, resultant displacement is equal to the sum of individual displacements. The other mark is for that. Then wavelength was given. Slit separation A was given, millimeter में था, converted into meter. Fringe separation हमने calculate की है. हमने ये देखा है कि कितने x's lie कर रहे हैं ना. So there were 8 fringe separations present between this distance 3.2. So we divided it by 8. We got the fringe separation in centimeter, divided it by 100, we got it in meter. Then we had to find the value of D. So we have to use the formula, rearrange it, make capital D as the subject, substitute the values in the expression, and you will get the answer for that. Okay? Then last में था कि lambda and D are constant. We want to study the relation between X and A. तो जिन दो quantities का relation आपने study करना है, make sure one of them is on the right side of the equal sign and the other one is on the left. So X and A, they have an inverse relation. So when the value of A is halved, the value of X doubles. ठीक है. So we plotted the points, joined them together, and we got the answer for that. Okay. Now let's do another question. State what is meant by diffraction. So diffraction means the bending of waves after passing through a slit or an aperture or a gap. So the bending of wave after passing through a slit. Okay. So ये हमारे पास, this is the definition for diffraction. Light of wavelength 720 nanometer in a vacuum is incident normally on a diffraction grating as shown in figure 6.1. So again the wavelength is given. ये small n का मतलब क्या होता है? Nano, और nano के लिए we multiply the value with 10 की power -9. ठीक है. So ये हमारे पास ये सेंटर लाइन आ गई जहां पे 0 ऑर्डर मैक्सिमा होता है प्रोड्यूस. ठीक है. And what is the, if I just look at the angle, theta would be 52 का half करूं तो that is 26. So we also have the value of theta. We know the value of, we know the lambda. Okay. A screen is parallel to the grating and interference pattern is seen on the screen, and the angle between the second order maxima is this. Second order. So the value of small n is also given, which is 2. Calculate the frequency of the light. Usne kaha we have to calculate the frequency of light. Okay, do we know the wavelength of light? Do we know the speed of light? What is the speed of light? 3 into 10 raised to power 8. So which formula we have to use? V is equals to F lambda, where V is the wave speed, F is the frequency, and lambda is your wavelength. So we have to find F, make F as the subject. So F is equal to V over lambda. So wave की speed है 3 times 10 की power 8, and the wavelength is 720
times 10 की power minus 9. Can you just 4.16 into 10 की power 14 hertz. We have to round off the answer to two significant figures. So 4.2 into 10 की power 14 hertz. I hope it's clear to everyone now. ठीक है? Okay. Next up, calculate the number of lines per unit length in the diffraction grating. Okay. Acha, do you remember this formula? N lambda equals to A sine theta. Small n stands for the nth order. Lambda stands for the wavelength. A is the slit separation, or theta is the angle at which the wave is diffracted. Acha, n की value है 2, wavelength is 720 into 10 की power minus 9. We don't know what is the slit separation in the diffraction grating. A times sine 26. So ये जो sine 26 है, ये पूरा इधर ले आओ and just divide it by this whole expression. Put the whole expression on calculator and tell me what is the value of A that we get. 3.28 multiplied by 10 की power minus 6. ठीक है? Okay, so we have the slit separation. ठीक है? मतलब diffraction grating में अगर आप लोगों को याद हो, diffraction grating में एक ग्रिड होती थी जिसमें ये लाइंस होती हैं, right? And A is the distance between one of these lines. ठीक है? A is equal to 1 over capital N, where capital N is the number of lines ruled per meter. A की वैल्यू हमारे पास आई है मीटर में, जो स्लिट सेपरेशन है. ठीक है? So now if I have to find capital N, so A और N की जगह swap कर देते हैं. So capital N is equal to 1 over A. So 1 over 3.28 times 10 की power minus 6. You put the whole expression on calculator. What do we get? So 3.048. So 3.0 into 10 की power 5. 5 per meter will be the number of lines per unit length in the diffraction grating. ठीक है? So first part was simple. हमें light की speed और wavelength पता थी. We had to find out the frequency. We use the formula V is equals to F lambda. F is equals to V over lambda. You put the values on in the expression. You got the answer. Next part में diffraction grating, जहां पे diffraction grating का जिक्र होगा तो we should remember this formula. जहां पे slit separation की बात होगी, double slit experiment की बात होगी, so we have to keep that formula in mind. Lambda is equals to AX over capital D. अच्छा, we use this formula. उसने आपको बताया हुआ है कि second order है, तो small n is 2. Lambda is 720 nanometer. So nano को convert किया into meters multiplied with 10 की power minus 9. A is the slit separation which is to be found, and theta is the angle of diffraction which is 26. क्योंकि angle जो लेते हैं वो zero order से लेके second order के दरमियान का लेते हैं. So we can't use 52. Okay? We substitute the values in expression. We got the value of A. अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है find the number of lines. मतलब he is asking us to find capital N. So A is equal to 1 over N. N is equal to 1 over A. So 1 over A की जगह put the value in the expression and you got the answer for that. The light in figure 6.1
is now replaced with light of a different wavelength lambda. Okay, so now we have changed the wavelength. It is observed that the third order maxima of this light are at the same position as the second order maxima of the light in figure 6.1. Calculate in nanometer its wavelength. So we have to find the wavelength. That means we have to use this formula again. N की जगह third order है तो n is 3, lambda is to be calculated. A is the slit separation. Diffraction grating की slit separation में तो कोई change नहीं है, तो पीछे हमने जो value निकाली है 3.28 into 10 की power minus 6 into sin of theta. अब उसने यहाँ पे एक लिखी हुई है कि third order maxima are at the same position as the second order. Means जब यहाँ पे पहले second order था, now we have a third order maxima at the same position, which means the value of theta will stay the same. So there is no change in angle. क्योंकि third order उसी पोजीशन पे फॉर्म हुआ है जिस पोजीशन पे पहले सेकंड ऑर्डर फॉर्म हो रहा था, तो उसका मतलब है उसका जो एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं है, so that stays as sin 26. Now 3 is being multiplied with lambda, shifted to the other side, put the whole expression on your calculators and please tell me okay, what is the final answer that we get. So we can write it as 4.8 into 10 की power minus 7 meters. I hope it's clear to everyone. If you have any confusion, any query in this, please beta, you guys can just ask me right now. Okay? So ये दो questions अभी हमने किए. Now we'll move back to the syllabus. I hope आप लोगों को ये थोड़ा सा मतलब समझ आ गया होगा कि कहाँ पे हमने lambda is equals to ax over capital D वाला फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ पे हमने n lambda is equals to a sin theta वाला फॉर्मूला यूज करना है, and when we have to use the formula v is equals to f lambda. Okay, okay, so now let's just continue from where we just left. So we completed the concept for the diffraction grating. ठीक है, we are done with diffraction grating. Okay, now today we're going to talk about the interference in sound waves. ठीक है, अभी तक so far हमने जो interference दो waves के दरमियान में देखी थी, the interference was between the transverse wave, मतलब कोई light waves थी, कोई microwave हो सकती हैं. So we had those type of waves previously. ठीक है, so let's just start with the interference of, so interference of sound waves. Yes, ठीक है. Okay, so we have an audio frequency generator. ठीक है, and this audio frequency generator is connected to two loudspeakers. Okay, so we have an audio frequency generator, and this audio frequency generator is connected to two different loudspeakers. Okay, now these loudspeakers will produce the sound waves. ठीक है, so we have these sound waves that have been generated by these two
loudspeakers. हाँ जी, आई होप अब क्लियर है, ठीक है. Yeah, so we have a screen in front of these, ठीक है, and we place a microphone because इनको डिटेक्ट करने के लिए we need a microphone to detect the sound wave, and this microphone is connected to a CRO, or we also call CRO as a cathode ray oscilloscope. So we've already studied about the CRO as well. CRO का purpose क्या होता है? To display the waveforms, to calculate their amplitudes, to calculate the time periods of the waves. ठीक है? So this is the major purpose of a CRO. Okay. So we have the X sensitivity and the Y sensitivity ones. So we have this CRO. Basically, let's say, beta, if I'm talking right now and somebody else starts talking as well, okay? And if our frequencies, if they just match by chance, so what happens? The sound will become louder. ठीक है, इंटरफेरेंस होगी ना यहाँ पे भी. इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता था? सॉरी, अगर फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो, यस, ठीक है. सो बेसिकली वी वांट द वेव्स टू बी कोहेरेंट, ठीक है. कोहेरेंट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को 1 मार्क की कोहेरेंट की डेफिनेशन बताई थी. व्हाट वाज द डेफिनेशन फॉर कोहेरेंट वेव्स? Such waves which have a constant phase difference, or such type of waves which have the same wavelength, frequency and the speed, ताकि जब वो आपस में इंटरफेयर करें, मीट करें किसी पॉइंट पे, so the resultant displacement will be equal to the sum of their individual displacements. तो अब हमारे पास इंटरफेरेंस होगी दोनों साउंड वेव्स के दरमियान. तो कुछ positions, अब this microphone will be moved along the screen. हम इसको इस स्क्रीन पे डिफरेंट पोजीशंस पे मूव करेंगे. सो वी विल ऑब्जर्व कि कुछ जगहों पे लाउड साउंड होगा. लाउड साउंड का मतलब ये है कि वी हैव अ मैक्सिमा ओवर देयर, एंड व्हेन वी हेयर अ सॉफ्ट साउंड, सो सॉफ्ट साउंड का मतलब है कि वी हैव अ मिनिमा एट दैट पॉइंट. तो जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास ये 0 ऑर्डर मैक्सिमा, फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फिर सेकंड ऑर्डर, एंड बिटवीन एवरी 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमास वी हैव 1 मिनिमा. सो 2 मैक्सिमास के दरमियान एक मिनिमा लाजमी प्रोड्यूस होता है, ठीक है. सो जहां जहां पे मैक्सिमा होगा वी विल हेयर अ लाउड साउंड ओवर देयर, ठीक है. जहां जहां पे मिनिमा होगा वी विल हेयर अ सॉफ्ट साउंड ओवर देयर, ठीक है. So capital D used to be the distance between the slits and the screen. यहाँ पे distance between the loudspeakers and the screen आ जाएगा, ठीक है. So मिनिमम तब होगी जब उनके डिस्प्लेसमेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है. तब होता है मिनिमम, ओके. और मैक्सिमम तब होता है जब आपके पास उनके एम्पलीट्यूड्स ऐड अप हो जाते हैं. जैसे लेट्स से एक ये वेव है और एक ये वेव है, ठीक है. सो इन दोनों वेव्स का, सो दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2, एंड द रिजल्टेंट वेव विल लुक लाइक दिस, ठीक है. सो दिस इज योर रिजल्टेंट. और ये किस चीज, ये कब होगा? व्हेन वी विल ऑब्जर्व अ मैक्सिमम, ठीक है.
एम्पलीट्यूड्स जो साउंड वेव्स के हैं वो ऐड होके दे विल प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड. ओके, व्हेन डू वी हैव अ मिनिमा? सो मिनिमा के लिए लेट्स से this is a first wave, let's say it's a, and we have another wave, yeah, like this. ठीक है? So what happens to the resultant? अब देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, जब इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है. So we can clearly see that their amplitudes will cancel out the effect. So ultimately we will have no sound in this region and we will have मतलब सिर्फ ये रह जाएगा because there's nothing to add into that. So this is minima and this is the first wave and this is the second wave and this is the resultant wave. Okay, so basically it's a ये जो graph है, these graphs are actually for the transverse wave, but the sound wave जो होता है, sound wave is what? Sound wave is a longitudinal wave. Okay, sound wave. So just for your representation, I have explained it in that way कि मतलब maxima या minima का actually meaning क्या है. ठीक है? So sound waves जो है, they are longitudinal waves. अच्छा, मुझे एक बात बताओ generally, can sound waves be plane polarized? Why? Because only the transverse waves can be plane polarized. And sound wave is a longitudinal wave. So agar, let's say if we just ask you for one mark, can the sound waves be plane polarized? So the answer is no. And the reason is because sound wave is a longitudinal wave and only transverse waves can be plane polarized. So basically, when we have a louder sound, so it's actually the compression regions that add together to form a bigger amplitude sound, and the rarefaction region, it adds together to form a lower amplitude sound, which is a softer sound. Okay, so we will see the phenomena of interference in this case as well. ठीक है? अच्छा, since we are generating the sound from an audio frequency generator, so that means that we know the frequency of the sound waves ourselves. So we remember what is the formula? Lambda is equals to ax over d. We can use this formula जहां पे भी waves के दरमियान interference का phenomena occur करता है. We use this formula over there. So lambda is equal to ax over capital D. Now we remember this formula, V is equals to f lambda, and if I make lambda as a subject here, so lambda is equal to V over f. Let me substitute this. V over f is equal to ax over capital D. So अगर मैं आपसे ये पूछूं, अच्छा x क्या है? X is the gap between two maximas. ठीक है? So this is a first order maxima. We have a maxima at this point. X was this. A हमारे पास क्या है? Slit separation. तो ये हमारे पास A आ गया. मतलब दोनों लाउड स्पीकर्स के सेंटर्स के दरमियान जो गैप है, that is the slit separation, which is A. D is the distance between the slits and the screen. And let's say अगर मैं आपसे theoretically एक बात पूछूं कि what happens to the gap between the maximas on the screen, or what happens to X if the frequency of the sound wave is increased. जी, सो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो एक्स पे क्या इफेक्ट होगा? किसको? सो मैंने आपसे ये कहा था, इफ यू वांट टू स्टडी एक्स एंड एफ, एक्स शुड बी ऑन वन साइड, it should be on the right side, and f should be on the left side of the equal sign. Do we have an expression for that?
ठीक है. सो बाकी सब चीजें कांस्टेंट है. तो ये अगर मैं लेट्स से इसको मैं वी डी ओवर ए एफ लिख दूं, वैसे तो मैं डायरेक्टली यहां से देख के भी बता सकता हूं कि एक्स एंड एफ हैव एन इनवर्स रिलेशन. ठीक है. सो ये जो चीज है ये कांस्टेंट है. So if this is constant, so what is the relation between x and f? Inverse relation. ठीक है. So if frequency of the sound wave is increased, ठीक है, then the gap between the maximas on the screen will also increase. Sorry, x will decrease. So if f increases, x decreases. And x stands for gap between the maximas on the screen. Yeah, separation between two consecutive maximas on the screen. ठीक है. I hope it's clear. बाकी एफ का किसी और चीज से रिलेशन, अब क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड है ना, तो क्योंकि एयर में ट्रैवल कर रही है तो स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द लाउड स्पीकर्स एंड द स्क्रीन, ठीक है, so what happens to the frequency of the sound wave, or maybe what happens to the fringe separation then? So agar if I have to study the relation between x and d, so x and d will have a direct relation. If you increase the distance, then the gap between the maximas will also increase. Okay? I hope it's clear to everyone. If you have any questions, any queries, okay, so please feel free to ask. No? So can we move on to the next topic now? जी, sorry. Stationary waves. ठीक है. स्टेशनरी वेव्स में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं दो तीन. ठीक है. बट वैसे जनरली द लास्ट टॉपिक इज अबाउट स्टेशनरी वेव्स, बट दैट टॉपिक इंक्लूड्स थ्री सब टॉपिक्स फर्दर. ठीक है. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स जस्ट डू इट. हाँ जी. Okay, I hope everybody has noted everything down as well. ठीक है. So stationary or standing waves. Okay, सबसे पहले तो we need to know the definition. ठीक है कि what is the definition for the stationary wave? When two progressive waves of equal amplitude, wavelength and frequency travel in the opposite direction. ठीक है. So what happens? The net transfer of energy becomes zero. ठीक है. Okay. I hope when two waves of same type means equal wavelength, frequency, speed, and amplitude traveling in opposite direction meet at a point, the net transfer of energy is zero. Yes, इसकी definition 2 मार्क की एग्जाम में आती है. The net. So either you're going to get a question on the double slit experiment, diffraction grating, या फिर stationary waves पे frequently आता है, या फिर जो शुरू वाला, या अगर उसका दिल करेगा तो mix कर देगा चीजें. ठीक है. So the net transfer
of energy equals 8 to 9. So एक तो इलेक्ट्रिसिटी और डीसी पे मस्ट है जो कंबाइंड क्वेश्चन एक आ जाता है ऑलमोस्ट 12 to 15 मार्क का वो ठीक है वेव्स और सुपरपोजिशन पे भी एक ही आता है कंबाइंड ठीक है डिफॉर्मेशन पे आपको सवाल आ जाता होता है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली वर्क पावर एनर्जी पे काइनेमेटिक्स में तो मस्ट आता है डायनामिक्स में मोमेंटम वगैरह में से लाजमी एक क्वेश्चन दे देता है सो ही कवर्स ऑल द टॉपिक्स ठीक है एंड आई हैव डन द सेम एज वेल ओके कभी कभी मिस होता है क्या मतलब इट्स रेयर है ना ठीक है रेयर है कि कोई वो फिर एमसीक्यूज वाला सेक्शन उसका बढ़ जाता है हाँ सो ये बात क्लियर है अच्छा इसका मतलब क्या है अब देखो बेटा सो बेसिकली वी हैव वी हैव अ स्क्रीन ठीक है अब मेरे पास एक वेव है to just draw the axis for this sorry like probably क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे ओके अगर आप लोग कहोगे जब तो फिर रख लूंगा एक उसी के लिए कह रहा हूँ अगर आप लोग कहोगे तो मैं सॉरी नहीं ऑप्शन मैंने अवेलेबल रखी हुई है कि इफ यू गाइस वांट टू गो फॉर एन ऑनलाइन और तो ऑनलाइन कर लो या फिर सही है सही है मैं भेज दूंगा मतलब 20th मार्च को भेज दूंगा ठीक है ना हाँ 20th मार्च को अच्छा ये देखो अब देखो स्टेशनरी वेव्स है कि वी हैव टू वेव्स ऑफ सेम टाइप which means they have equal wavelength frequency speed and amplitude and they travel in an opposite direction and they meet at a point तो एक ये वेव है एक हमारे पास ये वेव है ठीक है so you can see okay so these waves they are traveling in the opposite direction एक आगे की तरफ मतलब है तो लेट्स से जब ये ब्लू वेव वापस रिफ्लेक्ट हुई है तो ये पाथ अडॉप्ट कर रही है ठीक है सो व्हाट हैपेंस द नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिकम्स zero and why because when this wave has a positive amplitude the other wave has a negative amplitude so if I add their amplitudes together so amplitude will cancel each other out the resultant wave ka amplitude will be zero which means that the net transfer of energy will be zero now we are going to talk about nodes and antinodes ठीक है so this point is called as a node nodes को मैं capital N से denote कर रहा हूं ठीक है and all these points are the nodes and what is an antinode so antinode is a are these points ठीक है so ये antinode है so these are the antinodes so these are your antinodes. Acha. Now, what is the meaning of a node or an antinode? So the node is where the amplitude is zero and antinode is a point on the wave where the amplitude is maximum. Okay? So N stands for the node. Okay? So node is a point where the amplitude equals to zero and antinode is a point बेटा तुम कुछ ना लिखना ठीक है शाबाश
आज तुम्हारे ही लेट हो. An amplitude, okay, antinode is a point where the amplitude is maximum. Okay, so I hope ये बात हमें समझ आ गई है. ठीक है कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं और स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं. ठीक है. So yeah, बाकी please remember the distance between two consecutive nodes is equal to half of the wavelength, and distance between node and an antinode is equal to quarter of the wavelength. क्योंकि देखो ये पूरा एक साइकिल होता है वेव का. दिस होल इज ये पूरा लेमडा है. नोड टू नोड हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज लेमडा बाई 2. हाँ, एंटीनोड इज अ पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज मैक्सिमम. ठीक है. सो जैसे ये वेव है, इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तैमूर, इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है. सो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर द एंटीनोड्स, और ये नोड्स हैं जहां पे इसका एम्पलीट्यूड 0 है. ओके. सो नो डिस्टेंस बिटवीन node to node is equal to half of the wavelength, right? Because ये एक नोड है और एक ये नोड है, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हाफ साइकिल को कवर कर रहा है, which means it's equal to lambda over 2. And the distance between node and an antinode is equal to what? Node and an antinode is equal to quarter of the wavelength. ठीक है. सो ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो यहां से यहां तक वाला जो डिस्टेंस है ये क्वार्टर है वेवलेंथ का, पूरे साइकिल का क्वार्टर हिस्सा. ठीक है. 1/4 basically. I hope it's clear to everyone now. If you have any question or any queries, please feel free to ask. जी, anybody? If you, sorry? हाँ, sorry. ठीक है. Sorry? Okay, I'll share the recording in the group so you can watch the rest of the lesson from there. वैसे we still have 5 more minutes. Okay? So determination of, so let's just do बाद में से कोई मुंह नहीं ना लगाएगा फिर. ठीक है. अभी तो इसको इज्जत मिल गई है. Okay, I hope it's let's just design an experiment. ठीक है. So with the help of these stationary or the standing waves, we can determine the wavelength and we can also determine the speed of a sound wave. ठीक है. So let's see how can we do that. Okay. Now let's just ऊपर वाला लिख लिया ना सबने. So we again have an audio frequency generator. ठीक है. This audio frequency generator is connected to a loudspeaker. I'll share the other worksheet of waves and superposition in the group as well. Please try to do the past paper questions by yourself. The rest, we are going to do the past paper practice of waves and superposition in tomorrow's class.
I'll be taking a 2-hour session tomorrow as well. Yes. Choice is yours. I'll be here. ठीक है. If you guys want to come and take the class here, आपकी मर्जी. अगर ऑनलाइन लेना होगा तो I'll share it in the group. नहीं, फिर सैटरडे को नहीं रखूंगा. Sure. Sorry? Same classroom. Last Friday, अच्छा, last Friday I was not here, but this Friday I'll be here, inshallah. Don't worry about it. So if you guys are willing to take the class, okay, so pardon, थोड़ा सा waves जो हैं. Okay, so we have these. ओके, सो ये आ गया. ठीक है. अच्छा देखो बेटा, जहां पे ना एंटी नोड्स होंगे ना वेव के, यहाँ पे एंटी नोड्स हैं, तो एंटी नोड्स पे उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो मैक्सिमम होता है. ठीक है. सो इफ सो देयर इज गोइंग टू बी अ मैक्सिमा ओवर देयर. तो मैं यहाँ पे एक माइक्रोफोन यहाँ पे लगा देता हूँ. ठीक है. एंड फिर मैं इधर वाले पे. Okay, so basically we're going to move the microphone along the horizontal path और हम देखेंगे कि जहाँ पे उसका sound maximum है वहाँ पे we are going to stop, and this microphone is connected to the CRO. So this is connected to the CRO. Okay. Okay, so we have the CRO, we have an audio frequency generator, and this audio frequency generator is going to produce a sound wave, and the sound wave is going to travel in the forward direction. ठीक है. So we have a metal sheet. This metal sheet will act as a reflecting surface. ठीक है. Reflecting surface. So it's going to reflect the sound wave in the opposite direction such that it produces a stationary or a standing wave. So we have these antinodes wale point. Okay, we place the microphone. Okay, now I'm going to use a meter rule to determine the length between these two positions of the microphone. Okay, so एक ये position है और एक ये position है. So let's just determine okay, so we are going to measure the length. So measure the length between these two positions, P1 and P2. Let me call this length as capital L. So capital L is the length between two consecutive antinodes. Antinodes. And we are using this meter rule so we can measure the distance between those two positions of the microphone where we heard the loudest sound. Okay? So this is a meter rule. And L is the length between two consecutive antinodes. Now, antinode और antinode, हमने ऊपर एक बात लिखी थी कि distance between node to node is lambda by 2, and so is the distance between an antinode to antinode as well. ठीक है? So distance between node to node or antinode to antinode, the distance is lambda over
2. So yeah, so इसका मतलब है this length L is equal to lambda over 2. ठीक है, and if I want to find out the wavelength of this sound wave, ये 2 को उधर जाके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा. So this is how we calculate the wavelength of the sound wave. So this is the wavelength of sound wave. ठीक है. Now the frequency of the sound wave is already known to us through the audio frequency generator. ठीक है. So इसकी frequency है f. So f पता है, मुझे wavelength भी पता है, तो can I find out the wave speed using the formula v is equals to f lambda? So we can just find out the wave speed. So this is how, with the help of stationary or standing waves, you can determine the wavelength, or you can also determine the wave speed of a sound wave. If anybody has any questions, please feel free to ask right now. जी, समझ आ गया क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट? ओके, सो दोबारा एक दफा देखते हैं. हमारे पास एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है टू जनरेट अ साउंड वेव. सो ये साउंड वेव जनरेट करता है, ये वेव ट्रैवल करती हुई आगे जाती है. एक मेटल की शीट है और दिस मेटल शीट हैज रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज. ये रिफ्लेक्ट कर देगी साउंड वेव को, and when this sound wave is going to reflect back, so it produces a stationary wave. Stationary wave क्या होती थी कि when two waves of same time travel in opposite direction, so the net transfer of energy is 0. ठीक है, ये आ गया. Now this is an antinode and this is another antinode. We use the microphone, we move it horizontally where we hear a louder sound. ठीक है, so we mark those positions. उन दोनों पोजीशंस के दरमियान की लेंथ मेजर कर लेते हैं L with the help of meter rule. This length L will be equal to lambda over 2 because length L is the length between two antinodes. और antinode to antinode in terms of wavelength क्या होता है lambda over 2. So ये 2 को उधर जाके multiply कर दोगे तो you will get the wavelength of your sound wave. Then use the formula V equals to F lambda, and you know the frequency and the wavelength. You can calculate the speed of sound as well. Any questions in this? Any queries? ठीक है, कोई बात जो ना समझ आई हो, इसको इस तरह से देख के समझ आते हैं, और डू यू गाइस वांट मी कि मैं इसके साथ थ्योरी वगैरह कुछ लिख दूं? ठीक है, ओके, चलो. So let's just talk about the next experiment. ठीक है, and the next experiment is stationary waves in strings. ठीक है, so let's just talk about the stationary वैसे तुमने लिखना छोड़ दिया है अभी यही फर्दर सर? लिख. सर जी बेटा, सर ये पेपर आपने बनाया? क्या चीज? ये पेपर आपने बनाया मॉक वाला? कौन सा? कौन सा क्या बनाया? ये पेपर जो होगा. अच्छा, मॉक का पेपर. हाँ, यस. No. Yes. Okay. Okay, so stationary waves in string using a sonometer. ठीक है, so let's say हमारे पास experiment ये है कि we have a wooden block. So we have this wooden block. ठीक है, ओके, ये वुडन ब्लॉक है. ठीक है,
अब इस वुडन ब्लॉक के ऊपर वी प्लेस 2 wedges. So these are the wedges. Wedges क्या होते हैं? ये ट्राइंगुलर शेप के, प्रिज्म शेप के जो है ना, ये हमारे पास एक ब्लॉक्स पड़े हुए. वी प्लेस देम एट अ सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, एंड वी measure the distance or the length between these 2 wedges. ठीक है? Okay. Now we're going to, यहाँ पे एक string है. We're going to attach a string. At this point, we have a pulley over here. ठीक है? And the string, एक end इसका fixed है. This end is fixed. This is a string. ये जो triangular prisms है, these are the wedges. This is a pulley. Prism में blocks नहीं होते हैं जैसे बच्चों वाले, उस टाइप के 2 वुडन वो हैं. और इस एंड पे we attach a load. Why? So that the string is taut. ठीक है? So load is attached. So to keep string taut. ठीक है? ये मैथमेटिकली आप लोग पढ़ा होना है ना, M1 में, मैकेनिक्स में पढ़ रहे होंगे. सो टू कीप द स्ट्रिंग टॉट, स्ट्रेच वो फुली हो रहा है. ठीक है, स्ट्रेच्ड है. अच्छा, नाउ व्हाट वी डू, आई एम गोइंग टू प्लेस अ लाउड स्पीकर एट द टॉप ऑफ दिस. ठीक है, सो आई हैव प्लेस्ड अ लाउड स्पीकर and we have connected it to an audio frequency generator. ठीक है, so we have this audio frequency generator. ठीक है, अच्छा, अब यहां से साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी और ये साउंड वेव जब स्ट्रिंग से को हिट करेंगी तो स्ट्रिंग क्या करेगा, वो ऑक्सिलेट करेगा. ठीक है, इट्स गोइंग टू ऑक्सिलेट मतलब वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे इस तरह. ठीक है, क्योंकि जब यहां से साउंड वेव आएगा और साउंड वेव जब इसको स्ट्रिंग को हिट करेगा तो वो साउंड एनर्जी की वजह से जो है ना, the particles of the string will start vibrating as well. They will start moving and they will form a wave as well. ठीक है, क्या चीज? सर जी बेटा, मेरी क्लास एंड होने वाली है. मैं दोबारा बता देता हूँ. ये एक वुड का ब्लॉक है, ऊपर आपने 2 वेजेस रखे हैं. वेजेस के दरमियान की लेंथ हमने मेजर कर लेनी है. वी गोइंग टू कीप दैट लेंथ फिक्स्ड. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट लेंथ. ओके, फिर we place an audio frequency generator along with the top, along with the loudspeaker at the top. This loudspeaker will produce sound waves, and these sound waves are going to collide with the string, and they are going to force the string to oscillate or to vibrate, and waves will be produced on the string. ठीक है, ओके. सबसे फर्स्ट केस में क्या होगा कि ये जो 2 वेजेस हैं, अब मैं थोड़ा सा, वी गोइंग टू कीप द लेंथ बिटवीन द वेजेस एज कांस्टेंट. ठीक है, L is the length between wedges. जी रहा, L is the length between the wedges. फर्स्ट केस हमारे पास ये है कि ये 2 वेजेस हैं. मैं थोड़ा डिस्टेंस दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को फिनोमेना समझ आ जाए सही से. अब मैंने आपको कहा है ये स्ट्रिंग ऑक्सिलेट करेगी अप एंड डाउन. सो द स्ट्रिंग
is going to oscillate like this. ये देखो, ये स्ट्रिंग ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रही है. अब ये जो पॉइंट है ये एंटी नोड है, ये जो पॉइंट है ये नोड है, ये जो पॉइंट है ये नोड है. क्योंकि हाफ वेव है ना, ऊपर और नीचे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है ना, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है. पहले वो नीचे जाता है, फिर स्ट्रिंग ऊपर चला जाता है, तो आधी आधी वेव है. तो वेव के दरमियान वाली जो लाइन होती है, उस लाइन पे जो पॉइंट होता है वो नोड होता है, और जो दूर दूर वाले पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास एंटी नोड्स हैं. सो ये नोड है, ये एंटी नोड है, एंड दिस इज अ नोड एज वेल. अभी हमने पीछे देखा था कि नोड टू नोड, अब इसके दरमियान जो लेंथ है वो हमने मेजर कर ली हुई थी ना, वेजेस के दरमियान की लेंथ वाज L. So the length between these wedges will be equal to lambda over 2, right? The length L is equal to lambda over 2. ये 2 उधर जाके L से multiply. So the wavelength will be equals to 2L. Okay. Now let's say if I have to calculate the frequency, formula पढ़ा है ना, F is equals to V over lambda. जी. Oh, sorry. क्या हुआ? ब्रेक कर ले, 5 मिनट की ब्रेक कर ले. हाँ, ओके, 5 मिनट्स की